Welcome to week 1 of your vocabulary journey. My name is Ashley and today I'm going to teach you 20 impactful words that is really going to upgrade your English skills. So stick around to learn about their meanings, pronunciation and play some short exercises with me. Let's get started. Alright, I have divided these 20 words in 4 sets for your simplicity, and so it becomes a little easier for you to evaluate and understand these words. Beginning with the first set, we have 5 words in those. I'm going to display these words as you can see already on the screen, and I'm going to give you a verbal explanation of these words along. So follow up with me and take some notes. Beginning with the first word, the word is voracious. Voracious का मतलब है भूखा रहना या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अगर आपकी इच्छा होती है तो when you desire or consume something in great quantities, that is what the voracious is. Next word is indiscriminate, means अंधाधुंध, बिना सोचे समझे select की गई चीज़. That is what the indiscriminate means. The next word is eminent, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई रेपुटेशन हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो. आउटस्टैंडिंग इज अनदर वर्ड फॉर दिस, लाइक दैट. द नेक्स्ट वर्ड, द वर्ड इज स्टेप्ड. स्टेप्ड मीन्स पूरे तरीके से भरा हुआ, राइट, या डूबा हुआ. दैट इज व्हाट इट मीन्स सोक्ड, ड्रेंच्ड, सैचुरेटेड. दीज आर ऑल द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लीट, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरीके से भरा हुआ या पूरा. Right, that is what replete is. Now let's play a short quiz related to this. How many you got correct from this first quiz? Share your answers in the comment. I will love to hear that. Now let's begin with the set 2. The words are abound first, right? The abound means भरपूर मात्रा में कोई चीज़ हो या बहुत ज़्यादा, plenty of things are there. Great number में exist करना किसी चीज़ का, that is what the abound is. The next is technology. Technology applied science है, means जब आप science का एक practical usage देखते हो वही टेक्नोलॉजी है. लाइक मोबाइल फ़ोन, इसके पीछे भी साइंस है बट आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर पा रहे हो, प्रैक्टिकली इसका एक यूजेज है. तो दैट इज़ व्हाट द टेक्नोलॉजी इज़. प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब है प्रिडिक्ट करना या पूर्ण अनुमान लगाना किसी चीज़ का कि ये चीज़ ऐसे ही होगी. सो दैट इज़ व्हाट द प्रोग्नोस्टिकेशन इज़. ऑटोमेटन हम रोबोट को या यंत्र को कहते हैं किसी भी. मैट्रन कोई भी एक ओल्डर मैरिड वुमेन, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी मदर, शी इज़ अ मैट्रन, वो ओल्डर है, शी इज़ मैरिड. So like that. Let's play a short quiz related to these 5 words and share your answers in the comments as well. Try to answer them quickly. Let's start.
Okay, so far so good. Let's begin with the set 3. Words are a little typical. The first one is paradox. Paradox अब वो चीज़ है जो शुरुआत में गलत लगती है but eventually at end turns out to be true. तो ऐसे चीज़ें this is what called as the paradox. Next is realm. तो क्षेत्र या किसी का स्पेशल फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, राइट, दैट इज व्हाट द realm इज. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनल्स. तो एनल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कहा गया, इतिहास को कहा गया. कंपाउंड का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना या किसी चीज को मिश्रित करना या किसी को मिक्स करना. तो दैट इज व्हाट द कंपाउंड इज, मीन टू इंक्रीज और टू ऐड समथिंग टू समथिंग. दैट इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट द वर्ड इज टिंज. टिंज बहुत ही छोटी मात्रा है, चुटकी भर, राइट, लाइक दैट, अ ट्रेस, स्मैटरिंग और अ स्लाइट डिग्री ऑफ समथिंग. Okay, let's play a short quiz related to these 5 words and don't forget to share your answers in the comment box. Let's begin. Set 4 and the last 5 words. The words are badger, means किसी को परेशान करना, annoy करना, nag करना. All are the synonyms for this word, but किसी को लगातार आप परेशान कर रहे हो तो that is what the badgering is. Next is implore, means request करना, right, विनती करना. This is what imploring is. ड्रजरी किसी भी कठिन काम को या बोरिंग काम को कहा गया है. डल, हार्ड वर्क इज रेफर्ड एज ड्रजरी. इंटरमिनेबल वो चीज़ है जिसका अंत ही नहीं है, अनएंडिंग, अंतहीन. एंड द वर्ड इज परसीव लास्ट, मतलब किसी चीज़ को महसूस करना या किसी चीज़ को समझना. आप किसी के फीलिंग्स को समझ पा रहे हो तो यू आर परसीविंग देयर फीलिंग्स. दिस इज व्हाट इट मीन्स. So let's play a short quiz related to these 4 words and then afterwards I have some bonus words for you. So you have stuck so far this video, so it means you are really dedicated in improving your English. So I'm going to give you out 4 idioms for this week, and I'm going to display it on the screen and tell you its meaning and how to use them. Let's get started.
We have understood 20 words and 4 idioms. Along, we have also played some short quizzes to understand these words more effectively, how to use them in sentences. Now it's time to put them into use. So I've designed a review exercises for these 20 words and 4 idioms. I want you to pause your screen now and answer these exercises, and let me know your answers in the comment box. Hope you found this video informative and useful for yourself or for your friends. Don't forget to subscribe to our channel for our weekly updates. I'll see you next week on Monday with next 20 words and idioms. By the time, practice with these words, share this video, and I'll see you next time.